हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे फ्लक्स एंड मोनो के बारे में। अगर आप मोनो और फ्लक्स के बारे में नहीं जानते हो, आपको थियोरेटिकल पार्ट नहीं पता है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे मोनो एंड फ्लक्स का, और हम एक रिएक्टिव एपीआईज क्रिएट करेंगे। तो उसके पहले हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे आर ट्रेडिशनल रेस्ट एपीआई। तो यहाँ पे मैंने एक मैथ कंट्रोलर लिखा, और मैथ कंट्रोलर से मैंने यहाँ पे 2 रेस्ट एंड पॉइंट को एक्सपोज किया। वन इज़ द फाइंड स्क्वायर, अनदर इज़ द मल्टीप्लिकेशन टेबल। फाइंड स्क्वायर रेस्ट एंड पॉइंट एज एन रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा स्क्वायर ऑफ गिवन इंटीजर नंबर, और इस स्क्वायर को हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैथ सर्विस से। तो यहाँ पे सिंपली एज एन रिस्पॉन्स जस्ट आई एम रिटर्निंग द गिवन इनपुट, राइट? So you can see inside response video, I created the response video. So here I added the 2 field. One is the date field, another is the output, right? So date field will initialize while creating the object, और output field को हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू फिल करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे सर्विस में देख सकते हो। सेकेंड रेस्ट एंड पॉइंट क्रिएट किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल। तो यह रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सेस, बिकॉज यह रिटर्न करेगा टेबल ऑफ गिवन नंबर। और इस टेबल को कैलकुलेट करने के लिए हमने मैथ सर्विस में एक मेथड लिखी है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनपुट स्ट्रीम का यूज़ किया है। इनपुट स्ट्रीम रेंज क्लोज्ड स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे मैंने एक पीक और वी कैन से डिले ऐड किया है 1 सेकेंड का, राइट, ऑन ईच इटरेशन। सो यह 1 to 10 तक 10 सेकेंड का डिले रखेगी, राइट? और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है, राइट, मैथ सर्विस प्रोसेसिंग, राइट। एंड फिर मैंने उसके बाद इसको मैप किया है इनटू द रिस्पॉन्सेस, राइट, एंड देन वी आर कलेक्टिंग इट एज एन टू लिस्ट और रिटर्निंग लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सेस। एंड सेम वे वी आर रिटर्निंग लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सेस टू आवर क्लाइंट। यहाँ पे मैं एप्लीकेशंस को स्टार्ट करता हूँ, और जो भी ये रेस्ट एंड पॉइंट है उनको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। नाउ आई विल टेस्ट टेबल मल्टीप्लिकेशन रेस्ट एंड पॉइंट। And I will print the table of 5. You can say it is waiting for the response, and in the back end you can say we are calculating the table of 5. And after that, after finishing the operations into inside the back end, you received as a result at your client. So you can see we got the result here. Why? Because we are added the delay of 1 second on each iteration. अब same thing मैं इम्प्लीमेंट करूँगा बाय यूजिंग द मोनो और फ्लक्स। ओके, तो यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर क्लास क्रिएट करूँगा, रिएक्टिव कंट्रोलर, ओके, रिएक्टिव मैथ कंट्रोलर। ओके, हियर आई विल यूज द एनोटेशन सेम लाइक रेस्ट कंट्रोलर, एंड हियर आई विल यूज द रिक्वेस्ट मैपिंग will not change for the reactive, right? It will same as like traditional REST endpoint. Math, here I'll use the reactive math, and here I'll copy paste the methods from the math controller. So here you can see I will not change the get mapping for both the REST endpoint, but आपने मोनो एंड फ्लक्स की थ्योरी में देखा होगा कि मोनो रिटर्न करता है 0 और 1, और वी कैन से एम्प्टी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, वी कैन से 1, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मोनो। ओके, तो दिस विल रिटर्न एज एन मोनो, एंड यू कैन सी हेयर फ्लक्स रिटर्न द 0 or n, 1 or n or empty. So this is the n means multiple list of responses, right? तो हम यहाँ पे list की जगह क्या यूज़ करेंगे? Flux, okay, flux return, okay, we will use the flux here. Okay, now I need to create the
reactive math service. So I'll create the reactive math service. So I'll simply create the reactive math service here. And simply here I'll use service annotation, nothing will change, and here I'll copy the name of methods. Okay, so I'll copy these two methods, again the react and the service, copy it, but this will return type will change, this will be the mono. Okay, and this return type will be the Flux. So here you can see I just converted it into the mono, but here it is just like showing the here is the casting error, because this is returning the response and the required type is the mono. Then how we can convert it? So of course I'll use here the mono. Okay, and mono I'll use the from supplier, and from supplier we can compute anything, just like we can compute input into input, and then we'll map it input into input, we'll map it into our responses. So we can use simply responses, we can use here method response is equals to new, then that will fine. Now we can return it. Okay, so it will work for us. Return this rest endpoint will work for us. And why we are still showing the error? So we'll auto wire this सर्विस रिएक्टिव सर्विस, हम रिएक्टिव सर्विस को यहाँ पे ऑटो वायर कर लेते हैं, रिएक्टिव मैथ सर्विस ओके. Now it is gone. So I used it, right? And same way I'll go with this. So here I'm just using, right? So here I'll not use in this way also, because I'll write in the different way. So I'll start just here, I'll start the things. Okay, so here I'll use the Flux, because we are returning the Flux range, just like we use 1 to 10 here, and then we'll use the delay element for the, just where we used the peak, right? We can use delay element here, and delay element here we can provide the duration, and here simply just like duration dot of second, 1 second we can add here, and simply add, just like we want to do some operations, so we can use do next. Okay, and do next we can just like add the sleep. Okay, so I can simply create the pipeline, just like sleep util dot sleep of 1 second, right? And again, if you want to do next, this is we generally writing the pipeline. Okay, you can write the do next, and you can print like in the simple way 10 times you want to print, you can say system dot out dot print ln. No, I will want to pass the message something like, okay, so just like I want to use direct print ln, I can say reactive math output. Okay, I'll use I here, and then what I can do, simply I can map it. Okay, so here I can map it or I just into the responses. Okay, so I'll use the new response as in given. Here you can, I'll pass I into input, simple I will return it. Okay, so here I can you can see I created the
uh, math service, right, for the reactive in the reactive style. So we are returning the Flux here, and here we are returning the mono. Okay, so now it's fine. I'll test it. Okay, I'll rerun the application. Application's already started. Now we will test a reactive endpoint. So here I just test first for traditional REST endpoint. So you can see here is calculating is going on, and we did not get a result on our we did not receive at our client. Right now we received it. Okay, new result, we received it. Okay, now I'll go with the reactive. So here I'll change the reactive math. Okay, here I'll change it. So here you can see simply we just you can see we just getting the result in the streaming way, right? We are not betting the output, right? Complete process. We are not waiting the complete process of a result at backend. But one thing I'll tell you, just I'll bigger the screens, and then I'll again hit the REST endpoint. Okay, I'm hitting it. So you can see here I just hit it, then process is going on, right? And in between I'm just stopping it. I stopped it. Here you can see your applications is you stopped it, just like getting the data from our backend, right? But here you can see you did not get the complete array, right? This is the array, and as an array, but array bracket is start, but you did not get the closed bracket here. So you cannot perform any you cannot decode this at your client, or you cannot use this response at your client till the time you will not get the complete array object. So for that how we can do it, so in the next video we will write the streaming reactive service.